साइकिल्स काम करते हैं. अब हम आगे जाके देखेंगे कि इसमें एस्ट्रो साइकिल्स और लूनार साइकिल्स का क्या रोल है. एस्ट्रो साइकिल्स मतलब प्लैनेटरी एक्शंस और वो जो ग्रह ऊपर नीचे आगे पीछे होते हैं, घूमते रहते हैं, उसका क्या होता है. और लूनार साइकिल तो आपको पता है, फुल मून, न्यू मून डे, 14 दिन का साइकिल होता है. Every 14 days there is a new moon and a new no moon, new moon, no moon, new moon, and full moon, something like that. So that अमावस एंड पूनम की रात, दो important days होते हैं. Now I know some of you are thinking, sir क्या बोल रहे हो, हमको RSI सीखा है, right? But you know what? The most of the money or most of the big money made is of course with RSI and cup pattern and GFS and top bottom, but most of them big trades have come on the right dates, right? On the right dates and the right months, and that's the superpower which now I am giving you, and you can learn this from this. अगर आप चाहो तो आप इसको ऐसा भी कर सकते हो. मैं खुद भी ऐसा ही सोच रहा हूँ कि पूरा साल ट्रेड करने का जरूरत ही नहीं है, 4-5 डेट को ही ट्रेड करने का, और उसमें से 2 ट्रेड भी बराबर समझ में आ गए तो हो गया काम. Why to be in front of the screen the whole day? Now that's why my training or our courses are so different, that it's like we don't talk about intraday or day trading or आज का आज बनाया. क्वालिटी ट्रेड एंड क्वांटिटी ट्रेड नहीं करना है, क्वालिटी ट्रेड करना है, और पीस ऑफ माइंड चाहिए. और एक अच्छा ट्रेड और एक अच्छा ट्रेंड मिल जाए तो काम हो जाए. हर साल में 2-3 ऐसे स्टॉक होते हैं जो पैसा बना लेते हैं. जैसे यहाँ पे लिखा है, आई एम जस्ट वन ट्रेंड अवे. आई एम जस्ट वन ट्रेंड अवे मतलब एक ही ट्रेंड में मैं सब कुछ निकाल सकता हूँ. वो भरोसा और वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए. तो आप ये रोज की मगजमारी नहीं करोगे, अरे ये चला गया, वो चला गया, वो ऊपर जा रहा है, मेरा ये छूट गया, वो छूट गया, ऑल दैट, राइट? इट्स ओके. दैट कॉन्फिडेंस कि मुझे जब चाहिए और जब मैं रेडी हूं और सामने डेट भी आ रहा है, पैटर्न भी बन रहा है, कंफर्मेशन भी आ रहा है, तब मैं पैसा बना लूंगा. मुझे रोज करने की जरूरत नहीं है. Is that making sense? So let's go with that on your screen. On the next one is lunar cycles. Now lunar cycle जैसे मैंने बताया 14 दिन का साइकिल होता है. Wells Wilder, right? One of our gurus who invented RSI, right? Of course, respect to him for doing this. That's changed my life. In fact, the whole Malkanju is standing on RSI right now. Of course, there are a lot of changes on a lot of iterations we have done to that, but of course, the original base, guru ko to guru manna hi padega. And I'm so surprised sometimes. You know what? Some of the biggest YouTubers right now and trainers, supposedly trainers, are our students, but nowhere they mention our name. But I don't want to take their names right now, but let's not go into all that. I believe that always respect the guru. That's what you can do best to give, to do fair justice to their talent and knowledge. Okay, so difference of days between a full moon and no moon cycle is called the lunar cycle, which is every day 14. And RSI का default setting क्या है? 14. ADX का default setting क्या है? 14. तो ये वेल्स वाइल्डर भी लूनार साइकिल में मानते थे, इसीलिए उन्होंने 14 दिन रखा. अब अगर वो मानते थे और हम RSI को मानते हैं तो ऑटोमेटिकली हमको लूनार साइकिल मानना पड़ेगा, आप चाहो ना चाहो, राइट? सो और मैंने बीच में कहीं इंटरव्यू दिया था पॉडकास्ट पे, और किसी ने जुलाई में हो रहा था पॉडकास्ट 2023 में. I'll tell you the podcast also. You can go and check that also. It's on Ranveer Alabadia TRS show. और वहां पे मैंने बोल दिया कि इक्विनॉक्स के दिन पे टाइम चेंज होता है, मार्केट ट्रेंड हो जाता है, मार्केट ट्रेंड चेंज हो सकता है. और नीचे जो ट्रोलिंग हुआ, ट्विटर पे ट्रोलिंग हुआ कि सर किधर घुसा रहे हो एस्ट्रो साइकिल और ये साइकिल. ये जुलाई पे वीडियो है और 21 सितंबर. Go and check the chart. Market changed. Market trend changed and went down. I'll show you that chart also. Right? Moon cycles play a vital role in identifying the stock movement, and new concepts in technical analysis systems by Wells Wilder introduced 6 popular technical indicators, which is commodity, CSI, DMI, SAR, parabolic SAR, RSI, swing index और volatility index. ये सारे वेल्स वाइल्डर ने बनाए और उसमें से हम ज्यादातर RSI यूज करते हैं और कभी-कभी ADX, DMI भी यूज करते हैं, but mostly RSI. But सबका बेस lunar cycle. Can you believe it? This is like 70 years old, 80 years old. Now talk about astrocycles. Astrocycles मतलब क्या? Which is equinox. Equinox, anybody knows what is equinox? Equinox is basically one of the 2 times in a year, which is 20th March और 22nd September. ये 1-2 दिन आगे पीछे होता है हर साल डेट of the cycle. So last time it was 21st March, this time it's 23rd September. So around this 20 से 23 के बीच में
is March and 20 से 23 के बीच में September. Those are the 2 dates when the sun is above the imagined line around the center of the earth and day and night are of equal length. मतलब दिन और रात equal length के होते हैं, वहां से एक season change होता है, right? That's called equinox, right? और दूसरे दो जो होते हैं, जो जून और दिसंबर में होते हैं, उसको बोलते हैं solstice, which comes on 21st June and 21st December. But what we have seen so far, those dates are also important, but equinox dates are more important, more powerful, and they give us good change in trend. Now, this is what equinox looks like. Now, we don't need to go into all this. You can Google up, you can do chat GPT and find out about equinox. So, we'll go to the focus on Nifty. Now, full screen. Yes, now you can see that ये मार्च का इक्विनॉक्स है, उस दिन उसने इम्पोर्टेंट बॉटम बनाया और वहां से वो 1700 वाला, दिस इज 2004 लीप ईयर, so 1700 वाला 1900 हुआ within few days, which is 15% rally, right? Which is not small, right? It's a good trend change. September 2004, a small change in trend, a small correction of just 5%, not big, but a small correction, right? Then March 2008, equinox, bottom बना, actually जो bottom January में बना था, जो अपने आप में एक anniversary date है, which will come to later, उसको उसने retest किया और वहां से उसने एक rally दिया, which is another almost 10% plus. March 2008 leap year. This is September leap year, 2008 September, which is equinox from 4,200 to, this was the crash we are talking about. ये इक्विनॉक्स से क्रैश शुरू हुआ और अक्टूबर के एनिवर्सरी डेट पे खत्म हुआ, which you can see the bottom, मैंने जो बताया था 2200 निफ्टी का भाव. So it's दोनों टाइम साइकिल एक साथ मैच हुए. सितंबर वाला क्रैश अक्टूबर तक गया, अक्टूबर को बॉटम बनाया, वहां से वो बॉटम अभी तक दिखा नहीं लाइफ में. So can you believe that it was a decline for almost 1 month, such a sharp fall. 2008 crash, Lehman Brothers, all that Satyam Computers, all that scam happened. And it was crazy, right? So if you know the date, if you know this information, you could have at least taken advantage of this. Now let's say कि advantage नहीं लेते थे, लेकिन इससे नुकसान नहीं होता था. You understand? Advantage नहीं ले सकते थे शायद, हमको पता नहीं था कि इतना बड़ा crash होगा, लेकिन इससे नुकसान से तो बच सकते थे. So that is what I want to call for this one. Then now in this year 2012 लीप ईयर है, इक्विनॉक्स है, लेकिन कुछ नहीं हुआ, साइडवेज मार्केट, ठीक है. इनफैक्ट जो ट्रेंड था उसमें से वो साइडवेज में चला गया. तो दिस डिडंट वर्क. जैसे मैंने बताया, हर इक्विनॉक्स पे या हर बर्थडे पे हम धाम धूम से सेलिब्रेट नहीं करते, कभी कभी शांत रहते. दिस वाज अ बैड पार्ट ऑफ द ईयर. This is like a small change, September equinox with a gap down, gap up. Then March, small change in trend, 2016. September 2016, look at that. Gap, retest, bearish engulfing pattern, and confirmation, and one of the biggest crash from 8,800 to 8,000, 20%. Then this is March 2020, याद है ये क्या है? कोविड का बॉटम. कौन से दिन पे बना? 23rd March. Coincidence? No. Right? Then September 2020, equinox. Then March 2021, nothing happened. Not a leap year, sideways market. September 2021, not a big correction, small correction. March, continuation of a trend, 2022. September, small decline. एक दो दिन पहले ही हो गया. This was major bottom in 2023, March, which is amazing. Double bottom, retest, outside, inside, divergence, सब कुछ है. Then September, this was my biggest trade in that year, short trade, Bank Nifty, 4,000 point. 4,000 नहीं, this is Nifty, मैंने Bank Nifty में, I'll show you Bank Nifty chart also, this is Nifty chart. Simple trade, right? Then 24. In fact, ये सेशन, यही सेम सेशन मैंने कोई तो लाइव इवेंट किया था 15 मार्च को. आई थिंक इट वाज जैनम ब्रोकिंग इन सूरत, और वहां पे कुछ 1500 लोग थे. उनके सामने मैंने बताया था कि 15 मार्च को हो रहा था और मैंने बोला 21 मार्च आ रहा है, बॉटम बन सकता है. एंड दैट वाज द बॉटम मेड, एंड फ्रॉम देयर वी सॉ अ रैली ऑफ 600 पॉइंट्स ऑन निफ्टी. नाउ कम्स द बैंक निफ्टी चार्ट. लुक एट दिस, 2008.
2008 leap year, September. 2012 leap year, March. 2012 leap year, September. That's kind of an island reversal. We can see that. अब of course जब टाइम आता है तो प्राइस एक्शन भी कंफर्म करना चाहिए, विच इज द पैटर्न और द डाइवर्जेंस ऑफ द स्पिनिंग टॉप और व्हाटएवर इट इज. खाली आंख बंद करके ट्रेड नहीं करना है. राइट, सो वी नीड टू फोकस ऑन द पैटर्न आल्सो. सितंबर 2016 gap, resistance and down. This was the COVID bottom exactly at 22nd of March. Right? That's September, continuation of a pattern of a trend. March 2021, September 2021, Bank Nifty 2022, March. This was my best trade in 2022. I think it was 4,000 points on Bank Nifty. Yeah, this is the one. 2022 maybe, or 2023 bottom. And this was again my best trade in 2023 September, which was Bank Nifty again. It was more than like 4,000-5,000 points in just 20 days. Right, so, and there is no reason that we should not stick to it. Again, March 2024, this was just few months back. It made a bottom and it went up by 3,000 points. Right? Does that make sense? So, what are the important dates? You got equinox dates, which is 20th of September, and you got anniversary dates, which is 28th October and 21st January. तो ये चार डेट आपके लिए, अभी ये सब में एक दिन आगे पीछे हो सकता है. So not to bother about too much. अरे सर, मैं बोलता हूँ ना सर इक्विनॉक्स है 21st सितंबर, तो क्या रिप्लाई आता है कमेंट में बताएं. अरे सर 21st को तो सैटरडे है. अब क्या बोलेंगे? We need to understand, right? When we talk about markets, it's always the next working day or the previous working day. So you need to use some common sense, right? So you got some important information, and I shared this information at the right time, right? पहले सोचे थे कि 21 सितंबर को करते रहे, 21 सितंबर करेंगे तो शायद एक दिन पहले गेम खत्म हो जाएगा, right? So that's why doing few days before that so that you can take advantage of it. Now let's see. I'm in मैं लास्ट एक दो महीने से बहुत ट्रैवल कर रहा हूँ, बहुत कुछ काम चल रहा है और नया नया कुछ ना कुछ चल रहा है, लेकिन इक्विनॉक्स आ गया तो सब काम आराम साइड में और मेन काम फोकस ऑन ट्रेडिंग and charts and Bank Nifty and Nifty, because this is the time to make money. This is the time possibly to make money. शायद कुछ ना हो, शायद साइडवेज रह जाए, शायद कुछ इफेक्ट ही ना हो. ठीक है, नेक्स्ट एनिवर्सरी डेट अक्टूबर तो है ही 28. ये दोनों डेट में से कुछ ना कुछ धमाका तो निकलेगा ही, और वो एक ट्रेड, एक one trend away, right? You are just one trend away from a big trade, from a big turnaround, from a big confidence loss, from a big kind of a leap in your trading career. Right, so that was lunar cycles and that was astro cycles for you. Now we'll talk about something more in the next video. Till then, just take a break.